Good morning. So we have discussed the descriptive statistics, right, in the last session. Yes, I don't know why everyone is not attending this session. there are two students or three students joined. Maybe they are late. See, see, in descriptive statistics, so our descriptive statistics is completed. Do you have any questions in this? No, sir. Yes. No, sir. Okay. So let's start the next module is inferential statistics. Inferential statistics. So in this module, see, many a time you may require a very large amount of data for your analysis, which may need too much time and resources to acquire. In such situation, you are forced to work with smaller sample of the data instead of having entire data to work with, right? Like situation like this arise all the time at big companies like Amazon. For example, say Amazon QC department wants to know what proportion of its product in its warehouse are defective. What proportion of the products in its warehouse is defective? Instead of going through all of its products, which would be a lot, what they do is QC department, they can just check a small sample of 1,000 products, let's say 1,000 products, and then find for this sample the defect rate, that is proportion of defective products, and then based on the sample's defect rate, the team can infer what defect rate is for all the products in the warehouse, right? So इसको बोलते हैं inference. Now this process of inferring insights from sample data, of inferring insights from sample data is called inferential stats. Yeah. Right? This process of inferring insights from sample data is called inferential statistics. So note that even after using inferential statistics, you would be able to estimate the population of the data from the sample data, but you cannot find the exact value, right? This is because where you don't have the exact data, you can only make reasonable estimates about that data with a limited level of certainty. Therefore, when certainty is limited, we talk in terms of probability, right? Suppose for an example, you have India ka population ka data, and from that data you have taken samples of thousand data. So each samples are different, right? Each sample will be different, and you want to find the average height of the people, average height of the people. So if you take first sample 1,000, इनका average height suppose 5.7 feet है, तो सेकंड इसका भी 5.7 फीट रहेगा क्या सेकंड सैंपल का? No, may different. हम्म It may different.
या इसका 5.8 है सपोज, इसका 5.9 है, इसका 6 फीट है। तो कैन यू सी कि यहाँ पे फॉर each sample there is limited level of certainty in the data, right? So that's why we talk in terms of probability. Talk in terms of probability, right? Now see here, you should know basic definition of probability, multiplication rule, addition rule of the probability, right? So I'll give you one task for inferential statistics. Or you can watch that video, or rather, let's go to article. Yeah. So this is your article, hypothesis testing, inferential, yeah, central limit theorem. Yes. You're here for DA or DS? DX data science. DS, no? Yes. Hmm. See, read about this. We'll discuss this thing in today's session.
See, now there are some modules, additional resources, interactive graphics that you can read. We have Seeing Theory. Seeing Theory, Brown University. Huh? So here you have some visualization, visual introduction to probability. The basic of probability, chance event, flip the coin, head. So this is very interesting. Here you have visualization, right? So variance also. What is variance? So this is very interesting. You can explore this. Now in this thing, we need to start. देखो सब कुछ दिया है इसमें. Conditional probability क्या है? Probability distribution क्या है? Now this is what we are going to start today's session. Random variables. Now see. Hmm. So in this session, we are going to focus on the agenda would be random variables, probability, distributions, and expected value, right? So yeah, do you guys know casino? Yeah. Yes. Yes. And do you know even though they distribute prizes, the prices are very hefty, right? $15 million ऐसे कुछ रहते हैं वहाँ पे, या फिर $5 million. Even though they are distributing these prizes, still they are very profitable. Still they are very profitable. Do you know reason behind this? If you don't know, we are going to learn this in our case study. We'll take this case study and we'll understand how the casino business is profitable. Right? Now recall the original question. In the long run, if it is played a lot of times, this game, casino, is this game profitable for the players or for the house? प्लेयर्स के लिए प्रॉफिटेबल है No. या हाउस के लिए? मतलब हाउस मतलब द वन हु ओन्स द casino game, right? So even though it looks like they are distributing prizes, but the model is very interesting. Now we'll find the all possible combinations. We'll find the probability of each combination. We will use the probabilities to estimate the profit or loss per player. Profit or loss per player. And we will see we'll find all the possible combination of the players. So let's take an example. Let's take an example. Suppose in that casino there is one organization and they are playing some game. The game is we have five balls. We have five balls in which initially three are red
and 2 are blue. Right? Now, if person is randomly picking up the ball and if he is randomly picking up the ball, right? So he should get 4 red balls. ऐसी probability कितनी रहेगी? He should get 4 red balls. मतलब एक पिक किया तो उसको रेड आना चाहिए, फिर से उसने रिप्लेस किया वहां पे, बैग में डाला, फिर से उसने पिक किया तो रेड आना चाहिए, फिर से रेड और फिर से रेड और फिर ब्लू चलेगा, राइट? तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो लेट्स प्ले अ गेम. सपोज if he is getting 4 red balls, he is getting 150 rupees. Suppose he is getting 150 rupees, right? If 4 red balls are there, player will get 150 rupees. Now, what do you think would be the probability of this? He's picking 4 balls. तो सपोज 4 रेड आएंगे तो चारों रेड 5 नहीं निकालने वाले, 4 बॉल्स निकालने वाले. चारों रेड आए तो 150 रुपीज प्राइज है. और इंस्टेड ऑफ दिस 4 के अलावा कुछ भी आया तो 10 रुपीज फाइन है, राइट? मतलब 10 रुपीज फाइन, उसको फाइन मतलब उसको देना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? सो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके? रेड 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 ब्लू, रेड ब्लू, रेड रेड. यहाँ पे भी 10 रुपए फाइन है. देन वी हैव रेड रेड ब्लू रेड. यहाँ पे भी 10 रुपए फाइन. रेड 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 ब्लू रेड रेड ये हो गया ना? रेड 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 ब्लू रेड, राइट? हो गया 10. ऊपर एक थर्ड नंबर के सेम हो गया सर. अच्छा, हो गया क्या? लास्ट को ब्लू है. रेड ब्लू रेड रेड. रेड 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 ब्लू वो भी हो गया. फर्स्ट में ब्लू है. 3 रेड ब्लू, ठीक है. उसके बाद में चारों फर्स्ट में ब्लू आएगा सर. लास्ट फर्स्ट में ब्लू रेड रेड. तो ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे है देखो. लेट्स डिवाइड इट इनटू लाइक दिस. 4 ब्लू बॉल्स, 0 रेड बॉल, राइट? 3 blue balls, 1 red balls, then 2 blue balls and 2 red balls, right? 1 blue ball and 3 red ball. And यहाँ पे रहेगा 0 blue balls and 4 red balls, right? तो देखो यहाँ पे 4 blue है, 4 blue. यहाँ पे कैसा है? अभी ये कैसा करना होगा? रेड ब्लू ब्लू ब्लू, राइट? देन ये रह सकता है ब्लू रेड ब्लू ब्लू, फिर से ब्लू ब्लू रेड ब्लू और ब्लू 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 और रेड. नाउ दिस थिंग, रेड 2 रेड एंड 2 ब्लू ना, तो इसमें इसके इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. देखो, रेड रेड ब्लू ब्लू रेड रेड ब्लू ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड रेड ब्लू ब्लू स्टार्टिंग रेड ब्लू ब्लू
blue, red, red, blue. Right? There is a blue, red, blue, red. So blue, blue, red, red. Right? Yep. और वन ब्लू है, इसके भी बहुत सारे रेड, 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 ब्लू. Red, red, blue, red. Then Red, red, blue, red. Red, blue, red, red. red, blue, red, red. Blue, Blue, red, red, red. red, red. राइट. और इसका एक है फोर रेड. Four, red. तो देखो सिर्फ एक ही इसमें प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे नॉन प्रॉफिटेबल है. राइट. पॉसिबल आउटकम्स ही हो गए. राइट. रिकॉल द ओरिजिनल क्वेश्चन कि पॉसिबल आउटकम कैसे निकाला जाए. तो दिस आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर योर गेम. राइट. डू यू रिमेम्बर? आई मीन देखो कितने सारे नॉन प्रॉफिटेबल है, कितने सारे. सिर्फ एक ही प्रॉफिटेबल है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉन प्रॉफिटेबल. So we have completed step number 1, finding all the possible combination. Now let's proceed to step number 2, finding the probability of each combination. Finding the probability of each combination. So we have quantifying outcomes. Where X represents number of red balls. तो रेड, 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 ब्लू, इसको X रहेगा 3. राइट. और रेड, रेड, ब्लू, ब्लू, इसको रहेगा X equals to 2. So now we have introduced the concept of random variable. What is random variable? It is denoted by X, and it can take any variable. Can take any variable associated with that associated the outcome of the number. That associates an outcome to a number. Any variable that associate an outcome and outcome नहीं, an outcome of the number. So कुछ भी रह सकता है. X 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है और 4 रह सकता है. राइट. So ये हो गया रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन. Right. Now in this link, let's see. Formal here, random variable is a function that assigns a real number to each outcome in the probability space. Define your own discrete random variable for a uniform probability space on the right, and sample to find the empirical distribution. Now click and drag the selected portion of the probability space and choose a real number and then press a submit. Real number, suppose 20 select करें, submit. So sample from probability space to generate the empirical distribution of your random variable.
So we are generating from a entire space over there. तो 20 है इसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इट्स वेरी लेस, 0.2, और 0.8 0.14 है, और 0.86 प्रोबेबिलिटी है किसकी? जो वाइट है, नॉट थ्री। राइट. लेट्स डू इट वन मोर टाइम. 5 सिलेक्ट, 5. तो ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है आपका. सपोज इसमें से 8 सिलेक्ट करें, 8. सबमिट. 8 प्रोबेबिलिटी स्पेस है ये सारा. सबमिट. Sample from probability space to generate the empirical distribution of your random variable. So ये 0.71 probability है, और इसकी 0.31 है, इसकी 0.71, 0.29, 7229, right? So there are two classes for probability distribution now. One is discrete, another is continuous. Now, just a minute. Now probability distribution 1. So recall that example, 3 red ball wala example. In our game example, we need to find if the game would be profitable for the player or not. The game is profitable for the player or not. So और हाउस, मतलब हाउस को प्रॉफिटेबल है या प्लेयर को प्रॉफिटेबल है. तो 3 steps of the process are: find all the possible combination, find the probability of each combination, and use the probability to estimate the profit or loss per player. So far we have completed 2 steps. One is finding all the possible combination. Second is find the probability of each combination. Now third step is using the probabilities to estimate the profit or loss per player. So far we have completed step number 1, and are on the step 2, finding the probability of each combination. For this purpose, we define a random variable x, which help us to convert outcomes of our experiment uh, to something measurable. Now let's actually find the probability of each of this distribution one by one. Let's actually find this. So यहाँ पे देखो, इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो इसमें x कितना होगा? x इज रेड बॉल, x इज 0, राइट? यहाँ पे Yeah. x इक्वल्स टू, यहाँ पे x इक्वल्स Two, टू, x equals to 3, three, and x four. equals to 4, right? So we have this set. Now, now let us draw a histogram. तो सपोज आपके पास कितने स्टूडेंट्स, कितने प्लेयर्स है? x इक्वल्स टू 0 के लिए आपके पास 2 प्लेयर्स थे, जिनका x इक्वल्स टू 1 निकला, ऐसे 12 प्लेयर्स थे. सपोज x इक्वल्स टू 2 निकला, ऐसे 26 प्लेयर्स थे. x इक्वल्स टू 3 निकला, ऐसे कितने प्लेयर्स थे? 25. x इक्वल्स टू 4 निकला, ऐसे 10 प्लेयर है. तो सिर्फ ये 10 प्लेयर प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे नॉन प्रॉफिटेबल, राइट? So you can draw a histogram on this. 0, 1, 2, 3, 4, right? Let's draw one histogram.
राइट, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 कितना रहेगा वो, 26 डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल कितना है 75, तो वो है 0.3466। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, वो कितना रहेगा 2 डिवाइड बाय 75, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, वो कितना रहेगा 12 डिवाइडेड बाय 75। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, वो कितना है 25 डिवाइड बाय 75। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, वो कितना है 10 डिवाइडेड बाय 75, राइट। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, right? So this becomes your probability distribution. This becomes your probability distribution. And इसका probability का sum हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा ना, obviously. Sum of the Yep. probability is obviously is equals to 1. Now this is known as probability distribution. Now ये probability distribution का भी आप distribution निकाल सकते हैं. What I'm saying is, suppose 0, 1, 2, 3 और 4 ये x का वैल्यू है और ये probability का वैल्यू है, राइट। 6 divided by 1. So what I'm doing is I'm taking this, inserting a column chart. और इसको लेबल चाहिए तो लेबल भी दे सकते हो, डेटा लेबल्स, ग्रीड लाइन हटाओ, कलर भी चेंज कर सकते हो, शॉर्ट। सो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ रेड बॉल, वाई एक्सिस पे है प्रोबेबिलिटी। So this becomes your probability distribution. This is table form. Either you can have in the form of table or you can have in the form of chart, bar chart form, right? So ये हो गया आपका probability distribution. Now you can play around with this data to make your understanding better for frequency distribution. Now see this. We have probability distribution 2 now. So probability distribution is any form of representation that tells us the probability of all possible values of x. It could be anything, it could be a table, or it could be a chart, as we have seen, right? Now an equation, probability of x, suppose एक equation है आपके पास, is equals to x divided by 21, and आपके पास x का वैल्यू है 1 से लेके 2, 3, 4, 5 and 6, right? So hence in a valid complete probability distribution there are no negative values and the total of all probability values add up to 1. These two conclusions follow from the basic definition of probability, and if you recall we discussed that the probability distribution and frequency distribution would be exactly similar
in shape, just with different scales. Now, आपके पास एक टेबल है सपोज x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, तो 1 इसका क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/21, 2/21, is equal to 1/21 सपोज, चलो फ्रैक्शन में रख देते हैं 2/21, 3 equals to 3/21, 4 equals to 4/21. ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, and we have 5 and 6, no? So 5 is equals to 5/21 and 6 equals to 6/21, right? Now if you plot this, so it will be like this. Now if you add this sum, it will be 1. 1, right? Now let's say a company management is pondering over investing in certain project. Before doing this, it wants to use probability to find whether it can safely expect to make a profit, and whether the company makes a profit or not will actually depends on which economical cycle is going on. Either it's a recession, boom, or so on, right? Based on the opinions of some experts, the following table is created. We have a table in which we have economic style, we have recession, we have normal, we have boom, right? And here you have a probability. We have 0.1, 0.7, and 0.2. Now, suppose as an analyst in the investment division, you have been asked to find answer to this question. Can company expect uh, to make a profit or not? Should it invest in this project or not? However, in this form, the table is of no help at all, right? Hence, let's quantify it using a random variable. Since you are interested in the company, whether the company will profit or not, let's define x as net revenue of the project. Now, through some calculations, a fellow analyst of the company has found what the net revenue would be for each of these scenarios. Now she creates a probability distribution with this data. So x में क्या है? Net revenue of the project in crore. Net revenue of the project in crores. So we have minus 305 plus 15 plus 95. And on y-axis, you have probability of x. So it is 0.1, 0.7, 0.2. Now you finally have a probability distribution for x. The net revenue of the project using the probability distribution you can find the answer to our original question. Can the company expect a profit from this project?
or should it expect a loss? However, to answer this, you'll have to learn the concept of expected value. To answer this question, we need to learn expected value. So what is expected value? Again, let's go back to the step 3, which we have followed. First is you have to find all the possible combination. Second is find the probability of each combination. And third is you have to use the probabilities to estimate the profit or loss per play. Now we have completed step number 1 and 2. Let's move to step number 3, which will be where we'll find the probabilities we calculate to estimate the profit or loss per player. Right? So now number of players, probability of x is equals to 1. ये क्वेश्चन है, अभी ये वो गेम वाला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, रेड बॉल वाला. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 कितना था? 0.16 इफ यू रिमेंबर. अच्छा यहाँ पे ले सकते हैं, लेट्स डू इट हियर ओनली. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 कितना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ रहे हैं अपन अभी. x इज इक्वल्स टू 1 कितना है वो? 0.16, राइट. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? कितने हैं वो? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 1000. The number of players with one red ball, 1000 into 0.16 हो जाएगा 160. 160 प्लेयर्स है जो कि रेड बॉल के साथ में है और जिनके पास रेड बॉल है, राइट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 कितना है वो? कितना है वो? 0.347, राइट. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने? 1000. नंबर ऑफ प्लेयर्स विद रेड बॉल वो कितने रहेंगे? 1000 इंटू 0.347, तो ये हो गया 347. वैसे अपन सारे वैल्यू निकालने वाले हैं अभी. सो जीरो रेड बॉल के साथ कितने प्लेयर्स रहेंगे अभी? सिमिलरली जीरो रेड बॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स विथ जीरो रेड बॉल्स कितने है वो? 0.026 ना, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो. 1000 इंटू 0.02667, तो 7 कंसिडर कर. 27 वो कितना है? 27. नंबर ऑफ प्लेयर्स विथ 3 रेड बॉल्स वो कितने हैं? 1000 इंटू 0.03, 330. सॉरी 333 करना चाहिए इसको, 333. और रिमेनिंग जो है 4 रेड बॉल्स, 1000 into 0.16. तो वो रहेगी 133. 1000 into 0.133. Yes, is it clear now, everyone? Yeah. Just a minute, एक minute. Sleep. Now see, expected value क्या सीन है अभी देखो. नंबर ऑफ प्लेयर्स विद 1 रेड बॉल है 160, 2 रेड बॉल है 347, 3 रेड बॉल है वो, 4 रेड बॉल है इतना, 0 रेड बॉल है इतना, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स देखो अभी वी कैन पुट इट लाइक दिस. 0 रेड बॉल्स कितने प्लेयर है? 27. 1 रेड बॉल कितने? 162.
red balls. कितने हैं वो? 347. 3 red balls. वो कितने हैं? 333. And 4 red balls. वो है 133. The total number of red balls. वो कितने हैं? 0.27 into 1. Sorry, 0. 0 into 27. 27 का आता है 0 red ball into 27 ना. एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं. देखो ये क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. सो 0 into 27, 1 into 160 ऐसा. 0 into 27 plus 1 into 160 plus 2 into 347, right? Plus 3 into 333 and last plus 4 into 133. So total number of red balls कितने हैं? 2385 है. Now average number of red balls for one game. वो कितना रहेगा? Average number of red ball for one game वो रहेगा 2385 टोटल प्लेयर डिवाइडेड बाय divided by 1000. 1000 मतलब टोटल प्लेयर टोटल प्लस 1000 है ना. मतलब ये कैसा हो गया? देखो ये कितना ये प्लेयर्स है ना, 27 प्लेयर्स. नंबर ऑफ प्लेयर विद 0 रेड बॉल कितना है? 27 ऐसा. यस सर तो एवरेज नंबर कितना हो गया? 2385 डिवाइडेड बाय 1000. नाउ ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये जो फॉर्मूला अपन ने यूज किया, दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू. दैट इज x x1 into probability of x1 plus x2 into probability of x2 plus x3 into probability of x3 ऐसा plus xn into probability of xn. And probability of x equals to x denotes the probability that x equals to red ball कितने. So यहाँ पे कैसा हो गया कि expected value क्या हो गया फिर? 0 into probability of x is equals to 0 red ball, क्योंकि 0 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करें तो x इक्वल्स टू 0 रहेगा, प्लस 1 into probability of x is equals to 1 plus 2 into probability of x is equals to 2 2 plus 3 into probability of x is equals to 3 plus 4 into probability of x is equals to 4. So this becomes your formula for expected value. So कभी भी आपके पास टेबल टेबल भी रहता है. देखो इसमें कैसा सीन है अभी. इट्स वेरी सिंपल. फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है? ये प्रोबेबिलिटी है ना. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. दिस सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ईवी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. देखो इज इक्वल टू 0 into 0.027 राइट, प्लस 1 into probability of 0.16 plus 2 into 0.347 right, plus 3 into 0.50 plus 4 into 0.133. This becomes a correction. This becomes your expected value in this problem.
So expected value we have seen. अभी अपना कितना आना चाहिए? थ्रू 2.385 आना चाहिए. 385. Just a minute. इसको लिखेंगे 2 into 0.333 लिखूंगा यहाँ पे. देखो फर्क पड़ रहा है. 3 डिजिट में कंसिडर करो, फिर 2.385 आ रहा है. So expected value should be interpreted as the average value you get after experiment has been conducted in an infinite time. For example, expected value for the red ball is 2.385. Expected value for a red ball is 2.385. This means that if you conduct experiment to play games infinite times, the average number of red balls per game would be ending up 2.385. मतलब आप कितने भी बार ये गेम खेलो, एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल कितना आएगा? मैक्सिमम 2.385 तक आएगा. 4 तो आएगा ही नहीं. और आपका प्राइस कब जा रहा है आपकी कंपनी का? जब एक्स रेड बॉल का एक्स वो कितना है? एक्स जब 4 रहेगा तब 150 प्राइस है ना. तो ये समझा क्या गेम? अभी ये मिलियन टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स ये गेम खेलो तो भी 2.385 एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल आएगा. तो 2.385 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा. तो आपने प्राइस क्या सेट किया है? 4 को. तो इनफाइनाइट टाइम्स खेला. सपोज देखो 150 रुपीज ये है ना. सपोज 1000 प्लेयर है. 1000 इंटू 10, क्योंकि 1000 प्लेयर 10 रुपए दे रहे ना लॉस में. तो 10,000 रुपीज जनरेट हुआ देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और मान लो कि 2 स्टूडेंट या फिर 2 लोगों को 300 रुपये उन लोगों ने दिया. तो 10,000 माइनस 300, 9,700 का प्रॉफिट हुआ है उनको, राइट. तो ऐसा कसिनो भी ऐसा रन होता है. The average number of red balls per game would end up being 2.385. You can try it. So you can clearly see that after a large number of simulation, the average value does in fact converge towards the expected value, which is 2385. Expected value का meaning अभी समझा क्या सबको? Is it clear now? Yes, sir. Right. All right. So let's stop here for the day. I'll share this stats day 1 on your drive to revise this. And ये link भी आपको चाहिए तो you can take this. It's very beautiful. Is it clear now, Manju? Yes. Yes, Manjunath. Yes, sir. It's clear. Just a minute. Statistics day 1. ठीक है, इसको ये चाहिए. What is this? Hey, Shravan, do you office? Is it remote or on No, site? sir. On site. On site है. Yes. और कब चालू होता है वो? 10 बजे.
सर 9:30 बजे चालू होता है, मैं 10 बजे जाता हूँ, अभी क्लास स्टार्ट होता है ना इसलिए। तो वैसे हेलो सर। वैसा चलता है क्या? इज इट दे हाँ, डोंट 9 घंटे फ्लेक्सिबल टाइमिंग है ना, 9 घंटे तक, 10 बजे तक चलता और वो पास में है या फिर it's है। हाँ, दूर? 15-20 मिनट लगते हैं चल के जाने में। पीजी किया वो ऑफिस के नजदीक ही, तो मतलब आप कहाँ से हो सर? आई एम इन नाशिक नाउ। नासिक। और प्रॉपर नासिक से ही हो क्या? यस। तो मराठी। यस मेरा। ऑलराइट, I have uploaded this on your drive. You can check. याद रखिए। Okay, sir. थैंक यू सर। Yes, bye everyone. Thank you. Yes, sir.